तो Q&A होता है एंड में क्या फॉर्मेट है? So firstly, I will be asking the questions, and if anyone from the audience is asking any question, or from the people who have joined us from the Google Meet, they can raise their hands and they can type out their question, and then we will take those questions and we would mess up. Okay. So should we start? श्योर, Okay. करें बिस्मिल्लाह. Assalamualaikum everyone. My name is Vishal Shakir. I'm a practicing lawyer based out in Lahore, and today I'll have the opportunity to moderate this session with Mr. Mian Saab and Mr. Amir Zafar Khan Saab. So, starting off from the introduction of our speaker, I would first introduce Mr. Amir Zafar Khan Saab. He has done his LLB honors with politics from University of Hull, United Kingdom. Then he has done his bar vocational course. He has been admitted in Lincoln's Inn for his barrister at law. He has done his LLM, Financial Regulation and Compliance from BPV University College, UK, and then he's practicing attorney at law, New York State since 2018. And we have with us Mr. Mia Ali Haider Saab. He is a practicing capital defense attorney based out in Pakistan with diverse and rich experience of 18 plus years in litigation. He's a mentor, teacher, trainer, and more importantly, a rising internet sensation on social media in Pakistan and across the borders. So I would like to welcome both our guests for this podcast. For our audience, I would like to mention the reason for this seminar is because a lot of people are getting in touch with us, with Mia Saab and with Amir Saab, to understand the process of registration of company in US specifically. Reason being, there's a lot of brain draining going on in these days in Pakistan, and specifically for those entrepreneurs or businessmen who are seeking an opportunity to start a business or start a company in US. So we thought to rather than just answering each person individually in inbox, we should have a session through which we have the experts right here, right now, who can address these issues. So without wasting any further time, I would just like to jump to Mr. Amir Zafar Khan sir. Sir, welcome to the session and Thank thank you. you. I would just start with the very first basic question that what are different types of companies that can be available for any person who is looking to start a business in US? What are those types and what are the litigation or the legal process involved in this registration? Okay, so basically we will be looking at primarily two jurisdictions that are mostly popular. One is Delaware, the state of Delaware, and one is the state of Texas. So essentially, as far as overseas people are concerned, there are two types of companies: a C corp, C corporation, and an LLC, which is a limited liability company. Now, most people that I've seen have opted for an LLC, maybe because they don't really understand the difference between an LLC and a C corp. Now, if you compare the LLC structure with that of Pakistan or India, for example, over here an LLC automatically means that it's a limited liability company, that whatever the liabilities are, they belong to the company, and the individual shareholder is not liable for any liabilities. But having said that, the issue with an LLC in the US, for example, in Delaware or Texas, is that the over there it's not called a shareholder in an LLC. Udhar usko member, it's called a member. Now the issue is that a member is liable for any liabilities that may arise out of that company's issues. Whereas a corporation is a true limited liability company in the true sense.
whereas the liability of the company remains with the liability. Now, as far as the LLC is concerned, a member is not a shareholder. Okay? So basically, the member is an owner of the company, whereas he technically, you cannot have, 100 shares for Vishal, or 100 shares for Mian Saab, or 100 shares for me. That doesn't work in an LLC. They're all members. Now, in order to do a proper business in the US, if you want to grow, for example, if you want to bring in other investors into the company, or stakeholders, if Vishal says, okay, you know what, I think Mia Saab's company is doing very well, I would like to buy 1,000 shares. Now you would have a problem doing that in an LLC, but you can do that in a corporation. So you can buy shares in Mia Saab's company. And you can obviously come in as a shareholder, and then you can have a board of directors. For example, you can be a board director. You can have directors in a C corp, but you cannot have a director in what you call it in an LLC, because again, like I mentioned, that it's sort of a member company. ये दो different types of companies हैं, LLC and C corp. Now, what is the other difference between the two? One major difference between an LLC and a C corp is for taxation purposes. अब यहाँ पे LLC is better than a C corp. Sorry, ठीक है. So basically, in an LLC, the structure for taxation is called a pass-through taxation. So pass-through basically means, what it means कि taxation जो भी government करती है, वो LLC से pass होके directly member पे लागू होता है. ठीक है. So जो भी आपकी taxation होगी वो member पे लगेगी, not at the company level. So it's mostly applicable to American citizens in the sense that, for example, I have an LLC, a legal LLC registered in New York. तो जो भी taxes मुझे देने होंगे वो मेरे personal income tax पे मैं दूंगा. ठीक है. अब उसमें दो और चीजें आ जाती हैं कि कौन सी स्टेट जो है उसमें पर्सनल इनकम टैक्स है और कौन सी स्टेट में फेडरल इनकम टैक्स है. अब टेक्सास यहाँ पे बेहतर है इन द सेंस कि टेक्सास में पर्सनल स्टेट इनकम टैक्स नहीं है. वहां पे you only have to pay federal income tax. So in that sense, that's better. So primarily ये दो टाइप हैं कंपनीज की. और अगर आप सेक्टर्स देखें तो IT कंपनीज हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल a lot of the IT companies actually go to Texas. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि टेक्सास कोई आपको कंपनी को कोई इंसेंटिव्स देता है. उसकी मेन प्राइमरी वजह ये है कि टेक्सास इज कंसिडर्ड द हब ऑफ द आईटी सेक्टर इन द यूएस. जिस तरह डैलस जो शहर है, दैट हैज बिकम सॉर्ट ऑफ द सिलिकॉन वैली. जिस तरह सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में जो है, दैट इज कंसिडर्ड कि जी आईटी गूगल शूगल जो है वहाँ पे बड़ा वो उनका एक हब बना हुआ है. उसी तरह टेक्सास में सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हैं, फॉर एग्जांपल, उनकी बहुत there are a lot of software companies, Indian software companies. बेतहाशा Indian software companies are based out of this area called Las Colinas in Dallas. बल्कि मेरे ख्याल से अभी recently Tesla जो है, Tesla is also shifting their operations to Texas because Texas obviously has become a hub for artificial intelligence, for research and development work. So a lot of people, it makes sense for companies to be incorporated in an area जहाँ पे ऑलरेडी एक आपका कह लें कि इकोसिस्टम बना हुआ है. Whereas अगर आप a lot of companies that are into say Amazon for example, ठीक है, Amazon not Amazon, जो Amazon sellers जो हैं, ठीक है, जिन्होंने सेलिंग हब बनाई हुई है, वो कंपनीज बना लेते हैं डेलावेयर में. ठीक है. क्यों? क्योंकि ज्यादा आपने जो है वो कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ने हैं. ठीक है. यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद दीज अदर कंपनीज और पीपल. ऑल दे डू इज कलेक्ट मनी और इशू इनवॉइसेस थ्रू दैट कंपनी. ठीक है. ये हो गया. और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. Yes. So Amisa, for what I've understood from your conversation right now, that there are pros and cons regarding both the companies, right? Both companies have their benefits and some regulation against them. So let's just say there is a person, Mr. A, who is in Pakistan currently and is planning to invest to start a company in US, specifically the states that you have mentioned. Let's just say for Texas.
Now he has no idea whatsoever that where to begin with, what documents are required, who to get in touch with, and what would be the timeline. We are not including the fee package here because it is subjective evaluation and we are not going to diverge into this. But the basic structure, that what documents would be required, how much time would be needed, and who to contact in US to get this process done, and what type of company would you recommend, considering the subjective evaluation of the client, that this LLC or the C corp would be the better option for them? Okay, so basically, what you primarily need as a foreign citizen is an unexpired passport copy. Okay, you need a passport copy and sometime a proof of address. They may ask depending on what jurisdiction you're coming from, but generally they don't. But you do need an address overseas. So primarily passport copy, an address. Now, if you want to go for an LLC, it's plain simple. You are just become a member. There aren't any shares in it. But if you're opting for a C corp, then you also need to know how many shareholders there will be and how many shares each individual will own. Now, there is no fixed cost, the valuation of shares. It can be, 1 cent. It can be 1/10 of 1 cent. So it can be 0.001. So that is not an issue. And insofar as which type of company is concerned, now, if the purpose is only to, I'll give you an example. So if you just want to sell your services on, say, Upwork, you know, and you want to show that you have a company based in the US as well, you can just opt for an LLC. It's just a plain and simple, easy structure. And you can even open a bank account with an LLC. You can just advertise your services through that. C Corp is mostly if you think, if you have the vision to maybe expand your company at a later stage. But remember that even an LLC can sometimes be converted into a C Corp. But obviously the whole structure changes, and it's very a cost prohibitive sort of a thing to do. But if right off the bat you think that tomorrow I will need to raise funding as well, you know Mhm. uh, this product that I have, I may ask Mia Saab or Vishal to come in and invest money in my venture, then I would definitely recommend going for a C Corp, because that is easy. All you have to do is issue shares to that new person or sell your shares to that new person. Now, the good thing is that that's an internal mechanism. You don't have to go to any government authority. You can just draft a share purchase agreement, an SPA, and you can just transfer shares. Now, people sometimes try to, your question, one of your questions was that who should they go to? Now, a lot of times people try not to engage US attorneys for this thing, and they say, yeah, let's go to an agent, and an agent can, just incorporate a company for us, and, we'll save money. What is the problem with that? The problem with that is that depends on the type of company that you have. Now, if you are in, if you're providing software services, for example, to some company. I'll give you an example. So I have this client. He engaged a company in Pakistan to provide some software related services. Now, what this company did was they did not provide proper IT services. Now, this client got in touch with me, and he's like, there's this company. They're incorporated in Delaware, and this is the name of the company, and I want to sue them for it. I was like, okay. So I went back and I tried to find out where the company originally originated from. So I found out that they were actually based in Lahore. Mhm. So now look at it from the other side. Now, if you have a company registered in Delaware, for example, and you provided software services to a client, and now the client is refusing to pay you for your services, what do you do? For example, if the client owes you $30,000 for this, app that you made for a client, the client is sitting in the US, you are sitting in Pakistan, but you have a company registered in Delaware. What do you do? Now, if you have registered that company through an agent, the agent is obviously not going to go out and file a lawsuit or get a lawyer or something, in order to what you call it, go after that client of yours who hasn't paid you the money.
that is where going through an attorney comes into handy. Now, if you had involved an attorney at the beginning, if you had gone through an attorney to register your firm, register your LLC or a C corp, if you had subsequently engaged the attorney to make a contract with that person. Now, how a lawyer looks at a contract is totally different than how a layman would look at a contract. That's a given. So, engaging an attorney basically does two things. One, it mitigates your exposure, and two, if the need arises to file a lawsuit against that other person or issue legal notices to that person, you already have an attorney. So it's relatively cheaper to go to the person that you incorporated the company through, as opposed to trying to find a new attorney in order to file that lawsuit. And then obviously you're not there. You don't know whether that attorney is going to provide you the right services or not. So that's the main reason why you should go through an attorney. Okay, sir. Vishal, So, let me yes. jump into it. Acha, Amir, thank you for these legal modalities. But let me play a devil's advocate or a layman person's language. Why I need a company in US when I can have a company in Pakistan? Why should I register my company in US? What are the benefits? So the first benefit that you have is that you have to think of the typical American client. Now, because there has been so much proliferation of overseas companies providing services, mediocre services, people not providing services, scams, people are not comfortable dealing with people overseas. As soon I'll give you an example. So, you're sitting in the US, somebody calls you up, and they hear, a non-American accent. The first reaction over there is, you know what, it's probably a scam. So that is one reason why it's very beneficial to have a company registered in the US. What that does is it gives this comfort to a client that, okay, you know what, this company is registered in the US. I can go online, I can check the company, I can check how long they have been registered for, I can check where their address is. And, generally companies that are registered in the US don't commit scams. So that's one reason why I believe personally that it's very important to have a company registered in the US. ओके आमिर ओके अगर मैंने कंपनी रजिस्टर कर ली ठीक है Mhm. मेरी कंपनी भी रजिस्टर होगी हाँ मुझे उसका फायदा क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस कि मेरी लीगल जिसे कहते हैं ना आप उसे वो बहुत वैल्यू हो जाएगी कि जी मेरे से अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं लोग मुझे पर्सनली पाकिस्तान में बैठे हुए क्या फायदा हो सकता है एक यूएस कंपनी को खोल के ऑपरेट करने के लिए क्या मुझे ये अमेजोन पे हेल्प कर सकता है हाँ, क्या बड़ा मुझे अच्छा सवाल ये है। ठीक है। अब आई होप कोई एफबीआर वाला ना बैठा सुन रहा हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ, वो फिर तो बेसिकली व्हाट अमेरिका में कंपनी फॉर एग्जांपल बनाने का फायदा ये है कि उस कंपनी के साथ आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है। उस बैंक अकाउंट खोलने का फायदा क्या है? उस बैंक अकाउंट खोलने का फायदा ये है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक आईटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, चलें, ठीक है, विप्रो एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, जो अमेरिका में भी उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, और वो ना लोकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज का भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करते हैं। सो विप्रो जो है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, ठीक है, टू प्रोवाइड एक्स वाई जी सर्विसेज। ठीक है। आपकी टीम पाकिस्तान बैठी हुई है। अब वो गुड्स तो नहीं है, वो सर्विसेज हैं। सर्विसेज तो आपने ऑनलाइन बैठ के प्रोवाइड करनी है। ठीक है। आप वो अग्रीमेंट जो है विप्रो के साथ साइन करते हैं थ्रू योर अमेरिकन कंपनी। ठीक हो गया। अब सर्विसेज तो आप पाकिस्तान से दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने वो अग्रीमेंट अमेरिकन कंपनी के साथ साइन किया है, तो जाहिर है जब आपने अमेरिकन कंपनी के साथ साइन किया है, तो फिर जो उसकी जो सर्विसेज की फी जो आएगी, कॉम्पनसेशन जो आएगी, वो आप अपने अमेरिकन बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है जो मेरी नजर में है। और दूसरा मैं एक बात बताऊं कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग ऑफ पाकिस्तान I can give you an example from my own client one of very famous medical education से associated I have one client और उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग स्टूडेंट्स मिलियंस के अंदर दे आर फ्रॉम इंडिया सो वन ऑफ द वेरी बिग एडटेक मेडटेक जो मेडिकल एजुकेशन की एक कंपनी ने उसको अप्रोच किया फॉर सर्टन सर्विसेज Now, due to the condition of Pakistan and India,
उन्होंने कहा जी हम आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं बट वी नीड एन अमेरिकन कंपनी सो दैट वी कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू इन यूएस एंड यू कैन ट्रांसफर द मनी एंड स्टफ लाइक दैट। सो एक चीज तो मुझे ये समझ आ गई कि आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, आपके बिजनेस की हेल्थ की वैल्यूएशन अच्छी हो जाती है। अगेन एज आई सेड कि मैं ले पर्सन की जुबान में बात करूंगा, क्या मुझे कोई अमेरिका के वीजो शीजों का भी कोई फायदा हो जाता है अगर मेरे पास कोई फाइनेंशियल्स या इस तरह की कंपनी यूएस के अंदर है? क्या मेरी कोई फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर भी इसका कोई फायदा होता है? अच्छा, इस पे मैं आता हूँ। मैं जरा पैसों वाली एक बात अभी मियां साहब आपने की है, मैं जरा उस पे आपको थोड़ी और क्लैरिटी दे दूं। जो आपने कहा है ना कि वो कंपनी कहती है कि जी हमने अमेरिका की कंपनी के साथ ही डील करना है, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि देखें, आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान इंडिया में, ठीक है। इंडिया का मुझे सिस्टम फ्रैंकली इतना नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तान की हद तक आपको बताऊं। जो आपको भी पता है कि स्टेट बैंक के बहुत सख्त रूल्स हैं रेमिटेंस को लेके, ठीक है। आपने इनवॉइसेस देनी होती हैं उनको, और वो क्या करते हैं, महीना महीना 2-2 महीने आर्बिट्रेरली विदाउट एनी राइम और रीजन आपके पैसे फंसा के रख देते हैं। उसके ऊपर जाहिर है उनको इंटरेस्ट वो कमा रहे होते हैं। तो अब उन्होंने आपको पैसे यहाँ भेज दिए, आपको नहीं पता स्टेट बैंक ने फंसाए हुए हैं नहीं फंसाए हुए, लेकिन आप उनको कह रहे हैं कि जी आपके पैसे नहीं आए। अब जब तक पैसे रिलीज नहीं होंगे आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो एक जरा कैश 22 वाली सिचुएशन बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी क्लाइंटल भी खराब हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए बेहतर है कि आप उधर ही अमेरिका में कंपनी बनाए, क्लाइंट आपको उधर पैसे दे, फिर वो आपके ऊपर है कि आप उसको, अब वो पैसे जो है वो आपकी मलकियत है, अब वो आपके ऊपर है कि वो आप किस तरह बैंकिंग चैनल्स के थ्रू वो उसको आप पाकिस्तान लेके आए। तो इसका एक बहुत बड़ा क्लाइंट फ्रॉम क्लाइंट कंफर्ट पर्सपेक्टिव। दूसरा वीजे का। अच्छा, वीजे का सीन ये है कि अगर तो आपकी कंपनी जेन्युइन है, ठीक है, आप, अच्छा आमिर, सॉरी मैं आपको हाँ, काट रहा हूँ। ये सवाल मैंने इस वजह से किया है क्योंकि जब आपके साथ सेशन करना था ना, हम बैठ के रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन जो कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है उसके अंदर एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज ऑफरिंग कि मैं कंपनी बनाता हूँ और इसके आपको वीजे के बड़े फायदे हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। इस वजह से मैंने ये रेलेवेंट सवाल किया फ्रॉम एन एक्सपर्ट टू टेल अस अप्रोप्रिएटली क्या इसका कोई फायदा भी है कि नहीं। यार देखें, राइट ऑफ द बैट अगर कोई कहता है जी कंपनी बना ले वीजा इशू हो जाएगा, तो उसने तो फिर पूरी दुनिया उठ के अमेरिका चली जाए, तो वो तो होने वाला नहीं है, ठीक है। सो उसकी, हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन देयर इज अ प्रॉपर मेथड दैट यू हैव टू फॉलो, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर। उसका प्रोसीजर क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी बनाई है अमेरिका में, ठीक है, क्या लें, ट्रेडिंग कंपनी बनाई है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इन्वॉइसिंग कर रहे हैं, अमेजॉन सेलर हैं आप, ठीक है, आप इन्वॉइसिंग उस कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, चीजें आप यहां से भेज रहे हैं, ठीक है। अब 1-2 साल में उस कंपनी की अगर वर्थ इतनी हो जाती है, ठीक है, उसकी वर्थ इतनी हो जाती है कि फॉर एग्जांपल वो करोड़ों का बिजनेस कर रही है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, करोड़ों का बिजनेस कर रही है और वो पैसे जनरेट कर रही है, ठीक है, और हो सकता है कि आपने वहां पे कोई लोकल सेल्स पर्सन भी रख ली हो, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ यार्ड स्टिक क्या है। यार्ड स्टिक ये है कि दी कंपनी शुड बी डूइंग जेन्युइन बिजनेस, ठीक है। अगर जेन्युइन बिजनेस कंपनी कर रही है तो एक ऑप्शन होती है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर की भी, ठीक है, L1 वीजा उसको कहते हैं। सो देर इज ऑफन अ चांस कि उस L1 वीजे के थ्रू इंट्रा कंपनी ट्रांसफर हो जाए। अगर आपकी एक कंपनी पाकिस्तान में बनी हुई है और आपकी एक कंपनी अमेरिका में बनी हुई है, सो इंट्रा कंपनी आप एम्प्लॉयज वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ओनली फॉर रेलेवेंट पर्पस। ये नहीं कि कंपनी आपकी फॉर एग्जांपल कह लें कि मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है, और आप पाकिस्तान इंडिया में लोगों को कह रहे हैं जी कि ऐसा करो यार, मैं ना, मुझे 20,000 फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारा वीजा लगवा देता हूँ उस कंपनी के थ्रू। इस तरह नहीं होता। यू हैव टू प्रॉपरली फाइल, आपने फाइल बनानी होती है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई why you need this particular person based in Pakistan to come to this country and to serve in your company over here। और वो फाइल आपने बना के USCIS जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज है उनको जमा करवानी होती है। सो इट्स नॉट कि कंपनी बनाओ और वीजा लो, वो वाला नहीं है। यू हैव टू एक्चुअली मेक एन एफर्ट, जेन्युइन एफर्ट टू रन दैट बिजनेस। दूसरा मैं एक चीज बताना भूल गया था, कंपनी बनाने का फायदा। नहीं सॉरी, कंपनी नहीं, ये ट्रेडमार्क पे जब आएंगे हम ट्रेडमार्क पे फिर मैं बताऊंगा। अच्छा मैं एक और चीज आमिर यहाँ पे ऐड रेलेवेंट चीज ऐड करता हुआ चला।
आजकल आपने नोट किया होगा बहुत सारे ड्यू टू द कंडीशंस प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान, मेजॉरिटी ऑफ जो इन्फ्लुएंसर्स आप कह लें या एंटरप्रेन्योर्स कह लें, वो मिडिल ईस्ट की तरफ भी रुख करने लगे हैं और वहां जाके कंपनियां, सिंस यू आर also accredited lawyer in the Middle East, so please guide us on that as well. यार सोशल मीडिया की उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स, उसके ऊपर जो है वो गोल्डन वीजा दे रहे हैं। गोल्डन वीजा बेसिकली मींस के आपको मेरा 10 साल के 5 साल के 10 साल दोनों में से एक है, 5 या 10 साल का जो है वो आपको वीजा दे देते हैं, जो रिन्यूएबल होता है। यू कैन रिन्यू इट एवरी 5 years। नहीं नहीं आमिर, मेरा सवाल ये था कि वो अपनी कंपनी, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करते until and unless they have their legal entity in shape of a हाँ company in राइट the राइट राइट middle. राइट। हाँ सो ओके, सो बेसिकली यूएई आपको ऑफर करता है एंटरप्रेन्योर वीजाज, उसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ एंटरप्रेन्योर वीजाज जो है काफी सारी फ्री जोन्स हैं यहाँ पे, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कह लें कि फुजेरा फ्री जोन है और रास अल खैमा फ्री जोन है। ये फ्री जोन्स जो है ये आपको एंटरप्रेन्योर वीजा देती हैं। सो फॉर एग्जांपल यू कैन बी अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस पे दे रही हैं, और यू कैन बी अ वेरी टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर, उस पे दे रही हैं। तो और यू कैन बी अ वेरी गुड यू नो, आप खच किस्म की, आप वो बड़ी अच्छी किस्म की वो बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं टिकटॉक पे, उस पे दे रहे हैं। सो या एज लॉन्ग एज यू बेसिकली, उनका प्राइमरी यार्ड स्टिक ये होता है कि आप इधर आए, जो मैं आप बता रहा हूँ सीधा सीधा, आप इधर आए, इधर से आप अपनी टिकटॉक वीडियोस जो है आप प्रमोट करें, इधर बैंक अकाउंट खोलें, और जो आपको रेमिटेंस जो आती है आप वो हमें दें, इंस्टेड ऑफ कि आप पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, आप इधर बैंक अकाउंट खोलें, आप इधर पैसे डालें, जो प्राइमरी रीजन है। अच्छा, अब इस पे आने से पहले अगर फर्ज करो मैंने आमिर अमेरिका के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर कंपनी बना ली, ये सब कुछ कर लिया, अब अगर क्या इस कंपनी की वैल्यू ज्यादा बढ़ सकती है? अगर इफ यू कैन एक्सप्लेन समथिंग अबाउट ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाट इज दिस? डेफिनेटली। सो ट्रेडमार्क जो है अमेरिका का थोड़ा सिस्टम, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क कोई भी फाइल कर सकता है, खुद भी मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अमेरिका का यही सिस्टम था 2020 तक, ठीक है, 2021 तक, कि एनी पर्सन, एनी अमेरिकन कैन स्टिल डू इट। बाय द वे, अमेरिकन नेशनल लिविंग इन अमेरिका अपना ट्रेडमार्क खुद कर सकता है, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडियन, चाइनीज बहुत फाइल करते हैं। चाइनीज दिन के हिसाब से मेरे ख्याल से कोई 5,000 उनकी वो एप्लीकेशंस जाती हैं रोज ट्रेडमार्क के लिए, लिटरली मिनिमम 5,000 मैं बता रहा हूँ। तो 2021 में लॉ चेंज, अब अमेरिका में सिर्फ एक यूएस क्वालिफाइड अटर्नी ही आपकी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उन्होंने वो सिस्टम ही बंद कर दिया क्योंकि फ्रॉड बहुत हो रहा था। बल्कि मैं वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कुछ चाइनीज हमारे थे भाई लोग, उन्होंने कोई मरा हुआ एक कोई यूएस अटर्नी का उन्होंने ना ढूंढ लिया बंदा, लेकिन उसकी बार लाइसेंस अभी भी एक्टिव था, तो उसके नाम पे उन्होंने एप्लीकेशनें बड़ी भरनी शुरू कर दी थी। तो अब जो उनका पोर्टल है, पोर्टल को एक्सेस लेने के लिए 2 फैक्टर जो सिस्टम होता है वो होता है, उसके बाद आपका जूम पे इंटरव्यू लिया जाता है, और उस इंटरव्यू में जो है वो आपसे पूछते हैं जी आपका नाम, आप कहाँ कौन सी बार में आप एक्टिव हैं, और आपको बाकायदा कहते हैं कि जी अपना हमें आईडी कार्ड, अमेरिकन इशूड आईडी कार्ड, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट जो है आप हमें दिखाएं, टू प्रूव दैट यू आर एक्चुअली अलाइव एंड यू आर एक्चुअली अ यूएस अटर्नी। तो अब जो है वो यूएस अटर्नी ही फाइल कर सकते हैं ट्रेडमार्क्स। अब आते हैं सवाल पे, ट्रेडमार्क्स का फायदा क्या है? ट्रेडमार्क आपको रिस्पेक्टेबिलिटी देता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली सबसे ज्यादा काम आता है, जो मैं जिन लोगों का ट्रेडमार्क्स फाइल करता हूँ, आई वुड से 100% जो मेरे क्लाइंट्स हैं सारे जो हैं वो हैं अमेजोन सेलर्स, ठीक है। अमेजोन क्या करता है, शायद आपको पता हो कि अमेजोन की एक रजिस्ट्री है, ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्री। उस ब्रांड रजिस्ट्री पे आप अपने ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन उसको रजिस्टर करवाने के लिए पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है विद द यूएस ट्रेडमार्क अथॉरिटी। उसका फायदा क्या है कि जब अमेजोन आपको एज अ रजिस्टर्ड या पेंडिंग रजिस्ट्रेशन वाला ट्रेडमार्क आपको शो करता है, तो उससे क्या होता है कि जो इवन अमेरिकन जो हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार देखो ये बंदा जो है इसका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड है।
अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और अमेजोन कह रहा है कि उनकी ब्रांड रजिस्ट्री पे ये ट्रेडमार्क है, तो यकीनन ये कंपनी फ्रॉड नहीं होगी, ये फेक कंपनी नहीं है, ये जेन्युइन कंपनी है. सो दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ कंपनीज आर फाइलिंग ट्रेडमार्क एप्लीकेशन. जिसमें मैं बता रहा हूँ रोज के थोक के हिसाब से जो है चाइनीज 5-6 हज़ार तो सिर्फ वही मेरे ख्याल से दिन के हिसाब से कर रहे हैं. अच्छा आमिर, जो वो हमारा जो यूएस के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, इज इट ओनली स्पेसिफिकली फॉर यूएस और इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस द वर्ल्ड? ओके, सो उसका मेरे ख्याल से मैड्रिड कन्वेंशन होता है. सो बेसिकली मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा 2 मिनट में लूंगा इसके लिए. अगर आपका ट्रेडमार्क दुनिया में कहीं पे भी इन यूसेज है, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर मियां अली एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, मियां अली एक ट्रेडमार्क है और वो पाकिस्तान में यूसेज में है, ठीक है. और अगर कोई अमेरिका जाके या इवन दुबई आके उसको सेम आइडेंटिकल उसी गुड्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, सो टेक्निकली यू कैन गो एंड सू देम फॉर इट. लेकिन वही बात है कि अमेरिका कौन जाके सू करे, ठीक है. लेकिन हाँ, अगर आपका ट्रेडमार्क फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उस ट्रेडमार्क के बेस पे आप अमेरिका में एप्लीकेशन जरूर डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर यूसेज एंड सॉरी नॉट प्रायर यूसेज, प्रायर रजिस्ट्रेशन. उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जब प्रायर रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप की फाइल जब यूएस ट्रेडमार्क अटर्नी के सामने आती है, जो उनका इंटरनल अटर्नी, जो एग्जामिनर उसको कह लेते हैं, एग्जामिनर जो होता है, जब वो देखता है कि अच्छा ये पहले से रजिस्टर्ड है, उनके पास पूरा सिस्टम होता है चेक करने का. अगर किसी ने वहां पे ऑलरेडी आपका नाम से रजिस्टर भी किया हुआ और बाद में रजिस्टर किया हुआ, तो आपको तरजीह देंगे. उनकी जो है वो डी रजिस्ट्रेशन की तरफ चली जाएगी जो उनका जो मार्क है. सो तो ये आमिर, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो इट हैज इट्स वैल्यू इन यूएस? डेफिनेटली वैल्यू है, आपके ट्रेडमार्क को डेफिनेटली वैल्यू है. कोई आपको पासिंग ऑफ आपको नहीं कर सकता, आपके नाम पे फ्रॉडुलेंट गुड्स नहीं बेच सकता. आपके नाम पे फॉर एग्जांपल आप ले लो एग्जांपल अरमानी की ले लें, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल अरमानी इतना बड़ा ब्रांड है, अगर वो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड है और अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में मुझे पता चल जाता है कि जी अरमानी रजिस्टर्ड नहीं, मैं जल्दी से रजिस्टर कर लूँ, फॉर सम रीजन हो भी जाता है, और वो अरमानी ब्रांड से 2 नंबर चीजें, सब स्टैंडर्ड चीजें बेचना शुरू कर देता है, तो अंडर द कन्वेंशन मेरा तो लॉस हो रहा है. और तो साइलेंट में कर दूं, आवाज आ रही है? अच्छा. सो बेसिकली जो कन्वेंशन है, जो कन्वेंशन मेंबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, यूएस भी है, यूएई भी है. सो ये फायदा हो जाता है कि अगर किसी भी एक कन्वेंशन स्टेट में आपके ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो वो दूसरे कन्वेंशन स्टेट में भी वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं. अच्छा, विशाल, अदील ने हाथ खड़ा किया था. इसी पे आ रहा था कि we should take some questions from the audience as well. We have Mohammad Adil Kaur who has raised his hand for some question. So I would request Adil Saab to ask the question from either Mian Saab or Amir Saab. जी बिल्कुल विशाल, बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन करना था. बैरिस्टर साहब क्योंकि बता रहे हैं कि कंपनी का फ़ायदा भी है, तो मुझे एक चीज़ जाननी थी कि अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाए, मैंने एलएलसी रजिस्टर्ड करवा लिया है यूएस में और मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, कोई ऐसा डिस्प्यूट मेरा अराइज होता है क्लाइंट के साथ, तो उसको डील कहाँ पे करेंगे, आइदर इन पाकिस्तान और इन यूएस? देखें, अगर आप ने जो अग्रीमेंट है अपने क्लाइंट के साथ थ्रू योर अमेरिकन कंपनी साइन किया हुआ है, देन द डिस्प्यूट विल बी हैंडल्ड इन द यूएस, अदरवाइज इन पाकिस्तान. लेकिन उसका एक और कैवियट मैं बता दूं, अगर दोनों सिस्टर कंपनीज हैं, ठीक है, अगर दोनों सिस्टर कंपनीज हैं, तो कभी कभार होता है कि और डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या नौयत है उसकी आपके डिस्प्यूट की. समटाइम्स द कोर्ट कैन टेक jurisdiction here as well, अगर आप इवन अगर आपने अमेरिकन कंपनी के साथ ना किया वो साइन. लेकिन आमिर, एज पर एज आई रिकॉल माय एक्सपीरियंस, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो क्लाइंट के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं उसमें एडीआर का मैकेनिज्म आपने दिया होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. हाँ, वो तो एडीआर, अगर एडीआर है देन इट्स एडीआर, बिल्कुल एडीआर.
फिर वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चला जाता है। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं, आयरॉनिकली आज की तारीख में ADR टेंड्स टू बी मोर एक्सपेंसिव देन लिटिगेशन इन द US। वो ज्यादा महंगी हो गई है क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, इतनी कह लो कि स्पेशलाइजेशन आ गई है कि वकील उसका ज्यादा चार्ज कर रहे हैं ADR का। Yes. So that is another topic for debate. We will just come to Mr. Daud Aminsa, who is also raised his hand for the question. Daud sir, please, you can ask your question now. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह पाकिस्तान में एक फेडरल सिस्टम है, तो आपने SCCP में कंपनी रजिस्टर कराई तो ऑल ओवर पाकिस्तान ये कंपनी रजिस्टर होगी। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि मुझे टेक्सास में लेदर रजिस्टर करानी पड़ेगी। फर्स्ट करें मेरा बिजनेस एक्सपेंड होता है और मैं कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ अमेरिका में। मैंने टेक्सास में रजिस्टर करवाई थी और अब मैं दूसरी स्टेट्स में मूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं जब मैं उधर जाऊंगा तो मैं उधर एज अ फॉरेन कंपनी डील किया जाऊंगा या एक जैसा आम कंपनी होती है जैसा पाकिस्तान में है, क्योंकि अमेरिका के लॉस तो और है ना, हर स्टेट के अलग हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका जो कंपनी लॉ है वो मोरलेस एक ही, यू डोंट नीड टू क्रिएट अ कंपनी इन एवरी स्टेट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी, हाँ उसमें भी आपको बता देता हूँ कहाँ पे मुश्किल आती है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही है, ठीक है, रन ऑफ द मिल जैसे IT सर्विसेज हो गई या गुड्स हो गई, उसके लिए एक कंपनी बहुत है। आप टेक्सास में बनाए, उसके बाद आप 50 की 50 स्टेट्स में आप जाके बिजनेस करें, उसका कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ पे आता है, अगर आपकी फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, फाइनेंस कंपनी है या आपकी ट्रेडिंग कंपनी है, हर स्टेट के अलग लॉज हैं, ट्रेडिंग के अलग लॉज हैं, फिर फेडरल लॉ अलग है, ठीक है, तो वो फिर अलग लॉज उस पर लागू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक क्वेश्चन ये भी हमारे पास आया यूट्यूब पे। एक बड़ा प्रेवलेंट कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर थ्रू HCCP टू रजिस्टर SMCs, इज सिंगल मेंबर कंपनी। तो किसी को भी कुछ कंपनी खोलनी है, वो अकेला बंदा है, ही डज नॉट वांट टू शेयर द लायबिलिटी और ही डज नॉट वांट टू बिकम अ शेयर होल्डर इन अनदर कंपनी, ना वो पब्लिक कंपनी बनाना चाहता, वो सिंगल मेंबर कंपनी जाके बना लेता है आराम से। डू वी हैव द सेम प्रोसीजर और सेम थिंग अवेलेबल इन US और इन द स्टेट्स दैट यू हैव मेंशन्ड? एब्सोल्युटली, आप LLC भी सिंगल मेंबर कर सकते हैं और आप C कॉर्प भी सिंगल मेंबर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो ठीक है। अच्छा, इस चीज में कोई बेनिफिट होगा कि अगर एक बंदा है जिसका पाकिस्तान में एक रनिंग बिजनेस है, वो एक ऑलरेडी एक बिजनेस एस्टेब्लिश है, उसका कंपनी रजिस्टर्ड है, अब वो उसकी ही सिस्टर कंपनी या उसी का एक चैप्टर खोलना चाह रहा है US में, तो वुड इट बेनिफिट कि उसका एक ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर? इज इट इररिलेवेंट टू द पॉइंट? नहीं, इट्स इररिलेवेंट एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न्ड, इट्स इररिलेवेंट। हाँ बस ये है कि अगर आप उधर कंपनी बना देते हैं तो वो कह लें कि PR के लिए अच्छा होता है। एज फार एज योर क्लाइंट इज कंसर्न्ड, आप क्लाइंट को अच्छा लगता है कि जी बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है अगले बंदे का। और बल्कि सिंगल मेंबर के अलावा फॉर एग्जांपल अगर किसी की, एक तो है ना कि आप बजाते खुद एक कंपनी बना लें वहाँ पे एज LLC और C कॉर्प, अगर आप थ्रू योर कंपनी भी अगर आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे एज अ सब्सिडरी, आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बिफोर वाइंडिंग द सेशन अप, आई वुड रियली लाइक टू नो द problems that you have seen that people usually make while either registering the company or registering the trademark, जो through agents भी चले जाते हैं। कुछ points आपने already highlight कर दिए थे, but just to have a deeper dive कि जिस तरह clients कुछ खुद online पढ़ के they themselves become the lawyer or become the doctor, और वो खुद ही सारी चीज़ें खुद करने की कोशिश करते हैं, कुछ ट्रेडमार्क भी रजिस्ट्रेशन खुद करने की कोशिश करते हैं, कुछ आपने बता दिया कि अब US अटर्नी के अलावा तो ट्रेडमार्क रजिस्टर कर ही नहीं सकते। हाँ, बट अगर वो कोशिश करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन की, तो कौन कौन से इन योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने देखे कि ब्लंडर्स मार जाते हैं या लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? यार कंपनी जिस तरह फॉर एग्जांपल एजेंट्स के थ्रू जो करते हैं, वो एजेंट्स जो है उनको लारा दे देते हैं जी कि आपको तो कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं चाहिए, बैंक अकाउंट तो ऐसे ही खुल जाएगा। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। रीज़न बीइंग के चलें फ़र्ज़ करें कि जो ऑनलाइन ऐप्स हैं आपकी, जो कह लें ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुल भी जाता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, इफ़ यू फ्लाई अंडर द रेडार, लेकिन उनकी रेगुलर इंटरनल कंप्लाइंस चल रही होती है। जहाँ पे कंप्लाइंस पकड़ी गई, वहाँ पे वो पहले सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट बंद करते हैं, और वही रिपोर्ट जो है वो फिर आपकी जो स्टेट, फॉर एग्जांपल डेलावेयर ले लें, डेलावेयर कंपनीज हाउस कह लें, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसको भी वो रिपोर्ट कर देते हैं जी कि देयर हैज़ बीन अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या दिस पर्सन इज सस्पिशियस। तो वो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसमें एजेंट्स के थ्रू जाने के। दूसरा ये कि एजेंट एक गुमनाम सा एक चेहरा है, ठीक है, कंपनी है,
ठीक है। कल को अगर आपके खिलाफ कोई, हाँ, कल को जिस तरह जो ज्यादा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे ले लें फॉर एग्जांपल, कल को अगर उनके खिलाफ कोई लीगल नोटिस आता है, ठीक है, लीगल नोटिस किधर जाएगा, यू डोंट नो, ठीक है। हाँ, ये होता है कि अगर आप वकील करते हैं तो वकील का एड्रेस आप दे देते हैं कि जी अगर कोई मेरे खिलाफ लीगल नोटिस आए तो ये मेरा वकील है, जो बेसिकली लीगल नोटिस कहाँ जाता है, जो आपका ऑफिशियल एड्रेस है, ठीक है, तो सीधा वकील को आ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, लीगल नोटिस भी आ गया, आपको पता नहीं चला, अगले ने आपके ऊपर केस भी कर दिया, आपको पता नहीं चला। यक तरफा, जैसे समरी जजमेंट कहते हैं, अगर यक तरफा फैसला आपके खिलाफ आ गए, तो फॉर एग्जांपल आपने बैंक अकाउंट खोला हुआ है और बैंक अकाउंट में आपके फंड्स पड़े हुए हैं, फंड्स तो आपके फ्रीज हो गए, ठीक है। कब वो बैंक कोर्ट जो है वो फ्रीजिंग ऑर्डर कर देगा, पास टीआरओ पास कर देगा, पहले फ्रीज करेंगे, उसके बाद वो आपके, अगर आप जवाब नहीं देते तो फिर वो आपके अकाउंट्स अनफ्रीज करके जो दूसरी कंपनी की जो कॉम्पनसेशन बनती है अकॉर्डिंग टू द समरी जजमेंट, वो उसको दे देंगे पैसे आपके। तो ये होता है कि 4 पैसे शुरू में बचाने के चक्कर में जो है आगे जाके फिर आपको लॉन्ग टर्म ये नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। और सर ये भी बताइएगा कि क्या पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लाइंसेस भी हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, और वुड इट बी फाइन कि जब रजिस्टर हो गया एक वकील जो ऑथराइज्ड यूएस अटॉर्नी हैं, जब उसके हाथ में सारे मामला हो गए, then he would be the person who will be dealing all the post registration compliances as well. पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस जो है, देखें, ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ सर्विसेज पे भी, ठीक है। बैंकिंग कंप्लायंस इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बैंक की एबनॉर्मल किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल 1 महीने आपने बहुत ही अच्छा मार्का मारा है और आपके बैंक अकाउंट, ये अक्सर बाय द वे जो हमारे जो पाकिस्तानी जिनके पेयोनियर पे या पेपैल पे जिनके अकाउंट है, इनके साथ बड़ा ये उनको फेस करना पड़ता है। अगर 1 महीने में 5,000 की बजाय अगर समझें 8-9 हज़ार की ट्रांजैक्शन होगी डॉलर्स की, तो वो क्या करते हैं, अकाउंट बंद कर देते हैं। ये बहुत सारे ऐसे केसेस पाकिस्तान में हुए हैं, बल्कि मुझे याद पड़ता है पिछले साल मेरे पास, जब मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे पास आए थे एक जनाब, उनके I पास was the one जिसने कांटेक्ट किया था तुझे। तो उनके अकाउंट फ्रीज हुए हुए हैं, उसमें पैसे पड़े हुए हैं अमेरिका में, क्या करे वो। अब यही चीज अगर वो शुरू में एक वकील के थ्रू करवा लेते तो वकील एटलीस्ट उनको शुरू में बता देता कि भाई इसको ऐसे ऐसे लेके चलो, फ्रीजिंग ऑर्डर आ गया, यू इशू अ नास्टी लेटर टू पेपैल, ठीक है, थ्रेटनिंग देम विद अ लॉ सूट कि जी आपने किस बेसिस पे हमारा ऐसे आर्बिट्रेरीली आपने अकाउंट बंद कर दिए, या अमेजोन ने आपके अकाउंट सस्पेंड कर दिए, ऐसे कैसे कर दिए आपने। तो जब आप अटर्नी के थ्रू नहीं जाएंगे तो जाहिर है फिर यू रनिंग द रिस्क ऑफ लूजिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। बिल्कुल ऐसे। Sir, thank you so much for this wonderful insight. Due to the shortage of time, we would have to end. Vishal, let me conclude this. Okay. I'm very thankful, Amir, the way you have conducted this session, despite being your busy schedule. नहीं, और इसके लिए I know how things work in US. You guys charge मैं with वही the कहने वाला था, बिल भेज दूं, minute. बिल भेज देता हूं मैं। You guys charge with the minute and stuff like that. Pakistani हम लोग मुस्किन वकील है. So you just gave me the favor for my नहीं, audience, for everyone. Thank you very much. माय I'm प्लेजर, highly obliged. माय प्लेजर। और किसी को, आई मीन, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, यू नो वेयर टू रीच मी। Definitely, yes. We MMGLA forum is also available for anyone who is seeking the services of Mr. Amir or Mr. Mian. They can contact us, and our team will be available to coordinate accordingly. Sir, thank you so much. Thank you, थैंक Mian यू, Saab, and प्लेजर, our Thank you. audience. इज माइन, Thank you. सी यू, Thank you. हाफिज, बाय बाय। Bye. Come on. Bye.